Jheel and welcome to my channel. So this vlog is how I packed and did all the planning for my trip to Thailand. It was office trip and it happened on 16 January 2020 जब तक कोरोना की कोई बात भी नहीं हुई थी. And we were 62 people on this trip. It was team offsite and it was so much fun. I can't tell you. It's like amazing. It was my second trip to second international trip. Beach destination. पहले मैं बाली गई थी 2018 में. That was like solo trip. And this was like solo as in मेरी वहाँ से US से आई हुई friend मुझे मिली थी. But I traveled from India to Bali for the first time, like all alone, international flights, crazy. So this was also crazy and this is how I planned. Since it was office trip, so bookings, hotels, everything was done by office, and of course it was like partially paid trip. But baki cheezein, because when you're traveling international, there are a lot of things that you want to do. So mine is like, pehle to you have to create list, which I have by the way dropped things, which I will pick from my feed. So you have to create lists. So me is like me being me. I went to doctor. I got all the क्या बोलते हैं travel medicines and everything. जुकाम, बुखार, खांसी, पेन किलर्स, हेडेक और जो भी चीज़ें चाहिए होती है ट्रैवल में आपको मेडिसिन्स उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिए. Then you buy them and everything. Then the next thing for me, getting the photocopies of your passport and all the Aadhaar cards जो भी तुम्हें चाहिए, because when you're traveling international you want to have everything, because यार दूसरे देश में जाकर you cannot afford to lose something and then you don't even have a photocopy. तो मैं अपने हर बैग के अंदर एक photocopy रखती हूँ अपने पासपोर्ट की, just in case if it loses, मतलब I'll prove कि हाँ मेरे पास पासपोर्ट है. मैं अपने फ़ोन में भी फ़ोटो खींच के रखती हूँ. Then I have a drive पे फोल्डर जिसमें मेरे सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स का वो रहता है, because I really मतलब मेरे कई फ्रेंड्स के साथ they have like felt कि oh shit passport खो गया and they struggled a lot, so I don't want to get there. So after all of this, the major list is I create the list of outfits and the things that I have to, okay तो बाद में उठाएंगे. So I create sections here, and while sitting in office I made this list. Office trip था तो yes. So I have sections like क्लोथ्स लेने हैं तो उसमें क्या क्या लेना है. शॉर्ट्स का अलग सेक्शन है, स्कर्ट्स का अलग सेक्शन है, जंप सूट है, स्विम सूट है, क्योंकि बीच डेस्टिनेशन था तो आई कैटेगराइज्ड एवरीथिंग. देन पासपोर्ट, आईडी प्रूफ आर इन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस. देन आई हैव पावर बैंक चाहिए, सेल्फी स्टिक्स चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, टिकट्स चाहिए, वेट वाइप्स चाहिए, ड्राई वाइप्स चाहिए, और फिर थिंग्स टू शॉप देयर, ड्यूटी फ्री से क्या खरीदना है उन सब के सेक्शन, करेंसी एक्सचेंज करानी है. तो ये मेरा लिस्ट ना, ये वाला लिस्ट मेरा कम से कम 10-15 दिन पहले बन जाता है. मतलब मैं महीने भर पहले सोच के रफली बनाना शुरू करती हूँ एंड आई स्टार्ट टू जस्ट लाइक वर्क अराउंड इट कि करेंसी कितनी चेंज करानी है, पैसे कहाँ खर्च करने हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट आई रियली प्लान वेल थिंग्स, क्योंकि यू नो यू कैन नॉट जस्ट गो अगेन टू थाईलैंड द नेक्स्ट डे. तो अगर तुम्हें वहाँ जाके कुछ करना है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड. पावर बैंक चाहिए क्योंकि आप अपने फ़ोन से ही सब कुछ करते हो, पिक्चर्स क्लिक करना, वीडियोस बनाना, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, सो यू नीड पावर बैंक. सेल्फी स्टिक ऑफ कोर्स, you cannot have everybody around to click your pictures, so you need that. So I'm a person who wants to shop, so I got it done exactly. बीच पे जा रहे हो तो एक हैंडी बैग चाहिए, स्लिपर्स चाहिए क्योंकि कैसे जूते लूँ, and I do that a lot and I'm becoming better at it. And then what comes out? My flight suitcase, my airport bags, because I use different bags in trains and I have different bags for airports. I know, if you keep watching my vlogs you will see that. Planning for a trip, तो अपने एल्बोस पे अच्छे से फेयर एंड लवली लगा लें ताकि जब अगले दिन नहाएं और इसे रगड़े तो आपकी काली एल्बोस गोरी होने के चांसेस बढ़ जाएं. फेयर एंड लवली हैज़ नेवर वर्कड ऑन माई फेस एंड इट डज वर्क ऑन माई एल्बोज अ लॉट. इवन इफ योर नीज आर लाइक डार्क, बट नीज मेरे डार्क नहीं है, बट हाँ आई यूज इट. मी एंड माई डैड वी बोथ यूज इट ऑन आवर एल्बोज और बस अभी काली गोरी हो जाती है. That's it. That's how you plan for a trip, like prepare for a trip. और ये 16th की मॉर्निंग है और मेरा बैग का हाल ये है. I have not packed it and everything is lying here. और मैंने इतने सारे ऑप्शंस निकाल लिए कि बीच पे ले जाने के लिए ये बैग अच्छा है या ये बैग अच्छा है. Got it from Andaz Delhi and there is one more I can't find. अच्छा, I have already put it in my bag. ये ताज वाला which I use in office also. So I'm thinking ये फोल्ड नहीं हो सकता और ये फोल्ड हो सकता है और सबसे कम स्पेस ये लेगा एंड वेरी बीच कलर. सो आई टेक दिस. देन आई गॉट दिस ऑल्सो कि इन दोनों में से मैं कुछ लूँ या नहीं लूँ बीच पे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए. देन आई हैव वन हैट. आई डोंट हैव बिगर वन. ये मुझे मेरे फ्रेंड से मिली हुई है, सो
and now I have all these shorts. So now I have all these shorts lying around कि मैं कौन सी लूँ, कौन सी पहनूँ, एयरपोर्ट पे क्या पहनना है, एंड इफ़ आई विल बी वेयरिंग माई स्टीव मेडन जूते जो मैं कल लेके आई हूँ या नहीं. आई हैव टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मैंने सब निकाल के रख दिया है. मेरा बैग जो मुझे एयरपोर्ट पे ले जाना है इज़ पैक्ड. उसमें मैंने सब कुछ डाल लिया है. लेट मी जस्ट टेक अ लुक. सब कुछ इसमें पैक्ड है. सब चीज़ें सेक्शंस में डाल दी है मैंने. पासपोर्ट एक अलग सेक्शन में, और टिकट्स अलग, आईडी प्रूफ अलग, एक नोटबुक, वॉलेट अलग. आई थिंक मैं ऑफिस से जल्दी आके पैक करूँगी. स्लीपर्स में आई कुडंट बाय स्लीपर्स. पुरानी मेरी बहुत पुरानी थी तो आई गॉट दीज. ये बस 2000 आई थिंक 14 से है. स्टारबक्स से मैंने ये बिग बाज़ार से ली थी. वो बहुत सही है. और जो मेरी पुरानी चप्पल है भैया वो तो बहुत ही पुरानी है. सो आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड. आई जस्ट मेक नोट ऑफ थिंग्स एंड देन just one dress that I'm sure of is a party dress जो 17 तारीख को शाम को है. उसकी मैंने डाल ली है. बाकी मेरे सारे confusion state में चल रहा है. I don't know what I'll do. In the next video you guys will see that we are meeting everyone from the office meeting at the airport. Then we are going to Thailand and it was a 3-day trip and it was fun filled trip. So I hope you guys enjoy these vlogs and I'll see you guys in the next video. Until bye bye.